Namaste. My name is JVN Rishi Gautam from Department of Journalism. Today's topic is intrapersonal communication. Intrapersonal communication is a communicator's internal use of language or thought. It can be useful to envision intrapersonal communication occurring in the mind of the individual in a model which contains a sender, receiver and feedback loop. अगर डिफिनीशन की बात करें तो इन कम्युनिकेशन द सोशल मैट्रिक्स ऑफ साइकेट्री जर्जिन रचेज एंड Gregory Beston argued that intrapersonal communication is indeed a special case of interpersonal communication. Intrapersonal communication can involve speaking aloud, as in reading aloud, repeating what one hears, the additional activities of speaking and hearing, in the third case of hearing again, what can thinks, reads or hears. This is considered normal, although this does not exactly refer to intrapersonal communication, as reading aloud may be a form of rhetorical exercise, although expected in the relevant young age. इसके मैकेनिज़्म में अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, वो खुद के अंदर मीन्स अपने अंदर जो बातचीत चलती है, जो संचार होता है, उसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. अगर हम इसमें आगे देखें तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ एंड दैट मे इंक्लूड सेल्फ टॉक, एक्ट्स ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन and even recall and memory. You read on your phone that your friends are going to have dinner at your favorite restaurant. What comes to mind? Sights, sounds and scents. Something special that happened the last time you were there. Do we contemplate joining them? Do you start to work out a plan of getting from your present location to the restaurant? Do you send your friend a text asking if they want company? Until the moment when you hit the send button, you are communicating with yourself. Communications expert Leonard Shedleska explained intrapersonal communication through the 8 basic components of the communication process, that is source, receiver, message, channel, feedback, environment, context and interference. As transactional, but all the interaction occurs within the individual. Means intrapersonal communication is a communicator's internal use of language or thought. It can be used to envision intrapersonal communication occurring in the mind of the individual in a model which contains a sender, receiver and feedback loop. ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या है, अपने आप में अपने आप के द्वारा किया गया संचार है, जिसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. हिंदी में इसे अंतःव्यक्तिक संचार मीन्स अपने खुद के अंदर किया गया जो संचार है उसे हम इंट्रापर्सनल या अंतःव्यक्तिक संचार के अंदर रखते हैं. इसमें अगर उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जो हम पूजा करते हैं, हम सपने देखते हैं या हमारे मन के अंदर बहुत से विचार चलते रहते हैं, उधेड़ बुन, बहुत सी चिंताएं, सोच,
जो भी है जो हमारे अंदर चलता रहता है, ये सब इसके अंतर्गत आता है, जिसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। धन्यवाद।